मैक्रो बना। ब्लू में और प्रॉपर कटता है। अच्छा, हाँ तो ये तो हमने पहली बाकी बार सुना। ग्रीन यूज़ होने लगा है अभी वर्चुअल में। हम्म। प्राइवेट जगह पे ग्रीन यूज़ होता है। हाँ, एक बारी आवाज, जैसे आवाज इतनी ही चलेगी ना। हाँ आवाज़ ठीक, अपना नमस्कार पिच पे आप दोस्तों, बोलिए। मैं सी ए विवेक जैन। आज हम बात करने जा रहे हैं। वो वाला जस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सी ए विवेक जैन आज आपके समक्ष कुछ इनकम टैक्स से जुड़े पर्सनल लाइफ के मसलों को डिस्कस करना चाहता हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स से हमें कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और हम अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीज़न ठीक तरीके से नहीं ले पाते। आइए हम शुरू करते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑन गिफ्ट्स सबसे पहला आज का टॉपिक है। बहुत बार हमारे पास ये सवाल आता है कि मुझे अगर कोई गिफ्ट मिला है तो उस पर कोई टैक्स कैसे लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम इन गिफ्ट्स को कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहला है गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव। तो अक्सर आपने देखा होगा कि रिलेटिव्स हमें गिफ्ट देते हैं, तो लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि वो जो गिफ्ट मिला है वो उस पर इनकम टैक्स लगेगा या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इनकम टैक्स से मिले सभी गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं। सॉरी, रिलेटिव से मिले सभी गिफ्ट्स इनकम टैक्स में टैक्स फ्री होते हैं, ये सभी कर मुक्त हैं। लेकिन इनकम टैक्स में रिलेटिव की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। रिलेटिव की डेफिनेशन, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है तो उनके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, दादा दादी, उस इंडिविजुअल का बेटा बेटी, पोता पोती, इस तरीके से उसी इंडिविजुअल के भाई बहन और उसके स्पाउस, स्पाउस के फादर मदर और स्पाउस के ब्रदर एंड सिस्टर, किसी भी इंडिविजुअल के, ये सभी लोग रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। और इनसे मिले सभी गिफ्ट किसी भी इंडिविजुअल के हैंड पे टैक्स फ्री होते हैं। तो दोस्तों, अब हम सेकंड पे चलते हैं। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। अक्सर देखा गया है, जब आप कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ पर आपको एम्प्लॉयर कभी कभी आपकी अच्छी सर्विस से खुश होकर कुछ गिफ्ट दे देते हैं। तो ये गिफ्ट भी टैक्स फ्री है अगर उस गिफ्ट की वैल्यू 5,000 से नीचे है। लेकिन जैसे ही ये गिफ्ट 5,000 से ऊपर जाएगा तो ये टैक्सेबल हो जाएंगे और आपके एम्प्लॉयर को उस अमाउंट को आपकी सैलरी में ऐड करना पड़ेगा और उसके साथ टीडीएस काट करके पे करना पड़ेगा। गिफ्ट ऑन मैरिज। हमारा देश वर्ल्ड का सेकंड हाईली पॉपुलेटेड देश है। यहाँ पर हर साल बहुत शादियाँ होती हैं और शादियों में रिश्तेदार यार दोस्त हमें बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। सो दूल्हा और दुल्हन को इनकम टैक्स में स्पेशल प्रावधान है कि अगर कोई भी मैरिज के टाइम पर गिफ्ट मिलता है, चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो, यानी कि किसी वस्तु की फॉर्म में हो, वो सभी टैक्स फ्री होते हैं। जैसे कि दूल्हा दुल्हन को सामान के फॉर्म में मिलता है, ज्वेलरी है, फर्नीचर है, क्लोथिंग है, या रेफ्रिजरेटर है, वाइट गुड्स हम जिसकी बात करते हैं, टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये सभी मैरिज के समय पर मिलने वाले गिफ्ट दूल्हा और दुल्हन के लिए टैक्स फ्री रहेंगे। लेकिन अगर यही गिफ्ट
दूल्हा और दुल्हन के माँ बाप को मिले हैं तो दोस्तों फिर वो टैक्सेबल हो जाएंगे। अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं। गिफ्ट एक और तरीके से मिलता है हमें। बहुत बार हमारे यार दोस्त, हमारे पड़ोसी कभी ना कभी हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर, हमारे बर्थडे पर या हमारी किसी सक्सेस पर हमें गिफ्ट दे देते हैं। तो कोई भी गिफ्ट अगर 50,000 रुपये तक की वैल्यू का है तो वो टैक्स फ्री है, उस पर किसी को भी कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर ये गिफ्ट 50,000 से वैल्यू का ज़्यादा होगा तो आपको टैक्स में ऑफ़र करना पड़ेगा, ओवर एंड अबव 50,000। और जो भी आपका स्लैब रेट पर इनकम टैक्स का रेट फॉल करेगा, आपको उस टैक्स के हिसाब से टैक्स देना है। इस गिफ्ट में दो तरीके के हो सकते हैं, एक है कैश या बैंक चेक और दूसरा है वस्तु की फॉर्म में। तो दोनों में लिमिट 50,000 रुपये है। अगर 50,000 से कम का कोई कैश गिफ्ट है या कोई वस्तु मिली, जैसे कि कोई मोबाइल फ़ोन मिला या टेलीविज़न मिला, तो वो आपका टैक्स फ्री है अगर वो 50,000 से कम है। बट 50,000 से ऊपर जाते ही उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स में इन सभी वस्तु के लिए एक प्रावधान है जिसको कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई भी है, उसके अंदर 50,000 से ऊपर होगी तो टैक्स लगेगा। और मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इनकम टैक्स में बताई गई है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, पेंटिंग्स, गोल्ड, ये सभी चीज़ें वस्तु में आती हैं। और इसमें अगर 50,000 से नीचे है तो टैक्स फ्री और ऊपर है तो टैक्सेबल। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट्स यानी कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच और स्पीकर्स, ये सभी अगर आप किसी को भी गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट लेने वाले को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। बट हाँ दोस्तों, ये याद रहे कि अगर ये आपको बिजनेस करते हुए या प्रोफेशन के दौरान किसी ने भी गिफ्ट दिया है तो ये टैक्सेबल है। जैसे आप देखेंगे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई डॉक्टर है या लॉयर हैं, ये प्रोफेशन से हुए, या आप किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बिजनेस करते हैं और आपने कोई टारगेट अचीव किया या आपने क्लाइंट के लिए बहुत अच्छी कोई सर्विस दी, तो क्लाइंट कई बार आपको फीस के अलावा गिफ्ट में कुछ आइटम भी दे देते हैं। अगर वो आइटम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। और इस गिफ्ट के अंदर कोई टैक्स लिमिट भी नहीं है। अब हम एक मिथ से जुड़े बात करते हैं, रियल एस्टेट। बहुत बार लोग रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शंस करते हैं और उस ट्रांजैक्शन में कई बार बहुत मुनाफा भी हो जाता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि इतना बड़ा मुनाफा है तो उस पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा होगा। तो उसको बचाने के लिए लोग कई बार अपनी इनकम प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करते हैं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे हमारे पास एक घर है और हमने वो घर बेचा। कई बार हमें ये घर बेचना पड़ जाता है ज़रूरत के लिए। जैसे कि किसी को कोई ज़रूरत हुई पैसों की, तो ज़्यादा अमाउंट चाहिए था तो घर बेचा, या किसी के पास छोटा घर था और छोटे घर से वो बड़े घर में शिफ्ट हुए तो पुराना घर बेच दिया। या कई बार किसी का बिजनेस या नौकरी ट्रांसफ़र हो जाती है, आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो जाने के लिए आप अपना पुराना घर बेच देते हैं। या बहुत से लोग गांव से शहर आते हैं तो गांव की प्रॉपर्टी बेच देते हैं क्योंकि अब वो वहाँ पर वापस नहीं जा रही हैं। तो इस केस में कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आता है जिस पर टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। ऐसा लोगों का भ्रम है। हम इसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। किसी ने एक घर खरीदा 30 लाख रुपए का 2001 में और उसको बेचा 2022 में 70 लाख रुपए का। लोगों को मन में ये भ्रम रहता है कि 70 लाख रुपए का मैंने घर बेचा जो मैंने 30 लाख का खरीदा था 21 साल पहले, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ 40 लाख रुपए और मेरी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जहां पर टैक्स डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होता है। आइए हम इसको समझते हैं और डिटेल में। आपने कोई भी घर कभी भी खरीदा,
अगर उस घर को आप 2 साल की होल्डिंग के बाद बेचते हैं तो इनकम टैक्स कहता है कि आपको महंगाई दर के हिसाब से आपकी परचेज कॉस्ट को इन्फ्लेट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर वो घर आप आज 10 साल या 20 साल के बाद खरीदते तो महंगाई दर के हिसाब से उसकी क्या वैल्यू होती। इनकम टैक्स में हर एक साल का एक इंडेक्सेशन चार्ट बना हुआ है जिसको आप आपकी ओरिजिनल परचेज कॉस्ट को उस प्राइस के हिसाब से इन्फ्लेट करते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल में देखेंगे, 30 लाख का घर 2001 में खरीदा था और 2022 में बेचा। 2022 में इंडेक्स इन्फ्लेशन था 331, उससे हमने गुणा करा 30 लाख को और भाग दिया जिस साल में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। प्रॉपर्टी खरीदी थी हमने 2001 और तब हमारा इंडेक्स कॉस्ट था 100। मैंने अपनी एक्चुअल परचेज कॉस्ट को इंडेक्स्ड कर दिया और मेरी टोटल कॉस्ट बनी 99,30,000 रुपये। तो इनकम टैक्स में अब आपकी परचेज प्राइस 30 लाख की बजाय 99,30,000 मानी जाएगी। और अगर आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे, जो थोड़ी देर पहले हमें बम्पर प्रॉफिट आ रहा था सेल करने पर 70 लाख माइनस 30 लाख यानी कि 40 लाख का जो सो कॉल्ड एक बहुत बड़ा बम्पर प्रॉफिट था, वो अब हमारा घट के रह गया लॉस में, क्योंकि 70 लाख मेरी सेल वैल्यू थी और परचेज कॉस्ट 30 लाख की बजाय 99,30,000 मानी गई। तो मेरे को इस प्रॉपर्टी की सेल पर लॉस हुआ पूरे 29,30,000 रुपये का। और लॉस में दोस्तों आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। हाँ, यही सेल अगर हमारी 70 लाख की बजाय मान लीजिए 1,10,00,000 की होती तो ज़रूर आपको टैक्स देना पड़ता। तब आप 1,10,00,000 को माइनस करते 99,30,000 पर और प्रॉफिट आता आपका पूरा 10,70,000 रुपये। इनकम टैक्स में एक और प्रावधान है, क्योंकि जब भी हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो हमारा जो भी प्रॉफिट होता है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट होता है। आप काफ़ी सालों के बाद बेचते हैं तो इनकम टैक्स में फ्लैट रेट है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी 2 साल होल्ड करने के बाद आपने बेची है तो टैक्स की दर मात्र 20% लगेगी। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट था 10,70,000 रुपये, जिसको हम 20% की दर से टैक्स निकालते तो टैक्स आता 2,14,000 रुपये। तो आप अगर इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें कि प्रॉपर्टी की सेल हुई तकरीबन 1,10,00,000 की, लेकिन टैक्स आया सिर्फ 2,14,000 रुपये। तो हमें अपनी प्रॉपर्टी की सेल और परचेज ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखना चाहिए और उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर डिस्क्लोज करना चाहिए। हो सकता है कई बार हमारी इनकम पर टैक्स लगे ही ना, और या लगे तो वो थोड़ा सा कम हो। अब आइए हम अगले पड़ाव पर चलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। जब भी हम अपने देश में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम सभी के दिमाग में एक इन्वेस्टमेंट आती है, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट से भी जुड़े हुए बहुत सारे मिथ हैं, आज हम उसमें से एक पहलू पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको कोई भी आसान इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो सबसे आसान चीज़ है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में बेनिफिट ये है, इसको करना आसान है, ये सिक्योर भी है, और आपको किसी भी दिन पैसे वापस चाहिए हो तो आप बैंक में जाकर के फटाफट ले सकते हैं, सेम डे पर आपको ये पैसा अवेलेबल हो जाता है। मगर दोस्तों, कभी आपने ये गौर किया है कि क्या ये फिक्स्ड डिपॉजिट आपको उतनी रिटर्न दे रहा है जितनी की महंगाई है? ये फिक्स्ड डिपॉजिट आप अगर अपने माँ बाप के टाइम पे देखेंगे तो आपको हमेशा लगेगा, आप कभी भी उनसे सलाह लेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि आप पैसा है आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर लो। वो सरल भी है, सुगम भी है और गारंटी भी है। मगर उनके टाइम पर फिक्स्ड डिपॉजिट वाकई में बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि तब एफडी का इंटरेस्ट रेट 14, 15, 16 और बहुत बार 18% भी रहा है, और महंगाई दर तब 7, 8% होती थी। तो उनका कैपिटल हमेशा ग्रो करता था समय के साथ साथ। लेकिन आज के समय में, हमारे टाइम में, जब फिक्स डिपॉजिट के रेट काफ़ी कम हो गए हैं, आज की डेट में तो 6 और 7% के बीच में ही है। सो अगर आपको 6% की दर से एफडी पर ब्याज मिलेगा और आपकी महंगाई दर 7% होगी,
तो ये एफडी आपकी कैपिटल को कम कर रही है बढ़ाने की बजाय। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। आपने 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट की, जिसको ब्याज का दर था 6%। 1 साल की फिक्स डिपॉजिट की तो हमारे को 60,000 रुपये ब्याज मिला, और 1 साल के बाद मेरी कैपिटल की वैल्यू हुई 10,60,000 रुपये। मुझे अपने स्लैब रेट के हिसाब से इस 60,000 रुपये पर टैक्स भी पे करना है। हो सकता है कोई 10% टैक्स रेट पर हो, कोई 20 पर हो, या कोई 30 पर हो। जो भी टैक्स रेट आएगा आपको उसी टैक्स रेट पर इनकम टैक्स देना है। लेकिन अब यहीं पर हम देखते हैं कि मेरे पास परचेज प्राइस क्या है। 1 साल पहले 10 लाख रुपए हमारे पास कैपिटल थी, और इन्फ्लेशन की दर थी 7%। 1 साल के बाद आज जो सामान पिछली साल 10 लाख का मिलता था, वो मेरे को इन्फ्लेशन के बाद मिला 10,70,000 रुपये का। लेकिन एफडी में पैसा रखने के बाद मेरी वैल्यू थी 10,60,000 रुपये। तो आप ध्यान से देखेंगे कि आप जो सामान 1 साल पहले 10 लाख में खरीद पाते थे, आज एफडी करवाने के बाद भी, इन्फ्लेशन के बाद भी, आप उसको 10,70,000 रुपये में नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आपकी कैपिटल कम पड़ गई है 10,000 रुपये से। ये एक एफडी का मिथ है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एफडी नहीं करना चाहिए, एफडी हमें करना चाहिए। लेकिन हमें अपना एक इमरजेंसी फंड आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उस इमरजेंसी फंड के हिसाब से ही पैसे को एफडी करना चाहिए, ताकि कभी भी फ्यूचर में, लाइफ में हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े तो हम जाके फिक्स डिपॉजिट से निकाल लें, और वो एक इमरजेंसी फंड ही हो। लंबे समय के लिए एफडी आपकी कभी भी कैपिटल को ग्रो नहीं कर पाएगी। हाँ, वो सुरक्षित भी है और सुगम भी है, मगर आपकी एफडी परचेज वैल्यू को बीट नहीं कर पाएगी, और इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू घटाता चला जाएगा। और जैसे जैसे साल दर साल आपकी कैपिटल कम होती चली जाएगी। सो ये तो निवेश का वो तरीका हुआ कि निवेश करने के बाद भी आपकी वैल्यू कम बनी। तो अब आपका सवाल होगा, फिर हम ऐसा कहाँ पर इन्वेस्ट करें जहाँ पर हमारा कैपिटल भी बढ़े और थोड़ा सुरक्षित भी हो। सो आइए अब हम चौथे पड़ाव पर चलते हैं, ये है म्यूचुअल फंड। आजकल आपने ये तो सुना ही होगा, बहुत जगह ऐड आता है, म्यूचुअल फंड सही है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेवर में है। आजकल सभी लोग अपनी कैपिटल को ग्रो करने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, आइए हम इसको समझें। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही सरल सी स्कीम है। इसके अंदर एक कंपनी है जो म्यूचुअल फंड को चलाती है, और प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं। ये लोग हम सभी छोटे छोटे इन्वेस्टर से थोड़ा थोड़ा पैसा हमारी ज़रूरत के अनुसार लेते हैं। जैसे किसी ने 1 लाख रुपए दिया, किसी ने 1,000 भी दिया, किसी ने ज़्यादा भी दे सकते हैं। और उस पैसे को इकट्ठा करके वो एक एक मुश्त इक्विटी मार्केट में, या डेट मार्केट में, या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि स्कीम का मैंडेट होता है। हर एक स्कीम का एक मैंडेट होता है जिसके थ्रू आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो इन्वेस्टर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन स्कीम्स में पैसा डालते हैं, और फंड मैनेजर उसे प्रोफेशनली मैनेज करते हैं, और पैसे को अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको उस पैसे पर ग्रोथ होती है। तो क्वेश्चन ये है कि फिक्स डिपॉजिट ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन म्यूचुअल फंड ग्रो कर जाते हैं। सो म्यूचुअल फंड इक्विटी बेस्ड होते हैं। ये पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, और उसके बेसिस पर आपको रिटर्न्स मिलती है। अगर हम पिछले 20 साल का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का रिटर्न्स का हिस्ट्री देखें, तो आप पाएंगे कि तकरीबन 14 से 15% सालाना इन्वेस्टमेंट्स ने हमें रिटर्न दिए हैं, और उसी के बेस पर म्यूचुअल फंड्स भी हमारे को रिटर्न्स देते हैं। पर दोस्तों, ये रिटर्न्स कभी भी लीनियर नहीं होते। लीनियर यानी कि सिमिट्री में एक तरीके से कभी भी ये रिटर्न नहीं आती, जैसे फिक्स डिपॉजिट में आती है।
कभी मार्केट आपको रिटर्न देती है 20% की, कभी रिटर्न देती है 10% की, और कभी कभी नेगेटिव भी देती है। यही एक स्टॉक मार्केट का रिस्क होता है जो म्यूचुअल फंड में आपके साथ चलता है। बट अगर आप लंबे समय के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको ये रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसीलिए हमें छोटे टाइम की इन्वेस्टमेंट्स करनी हो तो हमें फिक्स डिपॉजिट्स में जाना चाहिए। वो सेफ भी होती है और इमरजेंसी में काम भी आती है। लेकिन अगर आपको 5 साल 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी जा सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो फ़ायदा ये है कि इसकी टैक्सेशन, इनकम टैक्स में म्यूचुअल फंड्स के ऊपर टैक्सेशन का रेट थोड़ा सा कम है। अब हम म्यूचुअल फंड्स को डिवाइड कर लेते हैं दो तरीकों में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर आप 1 साल या उससे ज़्यादा होल्ड करके बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाता है और उसके बेचे जाने वाले मुनाफे को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इनकम टैक्स में उस गेन पर टैक्स का रेट फिक्स है, बिल्कुल 10%। और अगर यही इन्वेस्टमेंट आपने 1 साल से कम टाइम में बेच दी, 6 महीने 8 महीने 10 महीने 12 महीने से कम है, तो टैक्स की दर लगेगी 15%। ऐसे ही नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको होल्डिंग पीरियड 3 साल का रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। और वहाँ पर भी जैसे हमने भी रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन फैक्टर को डिस्कस किया था, सेम हमारी परचेज कॉस्ट को इंडेक्स किया जाता है और इंडेक्स करने के बाद जो भी हमारी इन्फ्लेटेड इंडेक्स्ड कॉस्ट बनेगी उसको सेल से हम माइनस करेंगे। जो भी मुनाफा आएगा उस पर टैक्स की दर 20% लगेगी। हाँ, अगर आपने वही म्यूचुअल फंड 3 साल से कम समय में बेच दिए तो वो आपके इनकम का पार्ट बन जाएगी और आपका जो भी स्लैब रेट होगा वो हो सकता है 30% हो या हो सकता है 20 हो या ना भी लगे। जो भी होगा आपको उसी स्लैब रेट पर टैक्स देना होगा। सो म्यूचुअल फंड में किसी भी इन्वेस्टमेंट टूल से वो थोड़ा सा बेटर हो जाती है, क्योंकि एक तो उसकी टैक्स दर कम, दूसरा उसे करना बहुत ही सरल है। आप किसी भी सलाहकार से सलाह लें, अपना रिस्क को एसेस करवाएं और उसके हिसाब से वो म्यूचुअल फंड्स में स्कीम्स में लंबे समय के लिए पैसा लगा देते हैं। इसमें आपको कभी भी अगर पैसे की ज़रूरत है तो आप वो पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें आज पढ़ी और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हमारे क्या क्या मिथ थे। तो सबसे पहले हमने देखा गिफ्ट्स। जनरली लोग हमसे पूछते हैं कि गिफ्ट किस तरीके से टैक्सेबल होगा, तो हमने यहाँ पर चेक किया कि हमारे पास कौन से गिफ्ट्स टैक्सेबल हैं, कौन से गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं हैं, और जो टैक्सेबल हैं भी अगर उसमें कोई लिमिट है तो हम उस लिमिट का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा दूसरा मिथ बना जो कि रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन थी। बहुत बार लोग अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी को बेचते हैं और बड़ा जो मुनाफा आता है उसको भी आप कैसे इनकम टैक्स में प्लानिंग करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं और अपनी रिटर्न को सही तरीके से भर सकते हैं। ऐसे ही तीसरी चीज़ हमारी थी फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पर जनरली मिथ रहता है कि मेरे को कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है मैं फिक्स डिपॉजिट्स में चला जाऊँ, लेकिन जब आप देखते हैं लंबे समय के लिए फिक्स डिपॉजिट आपको बहुत बार नुकसानदायक साबित होता है। लेकिन छोटे समय के लिए फिक्स डिपॉजिट से बढ़िया तो कोई इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं है। और इसके बाद चौथा हमने देखा म्यूचुअल फंड, जिसको भी करना सरल है, सुगम है, टैक्सेशन भी हमारी कम है और इस तरीके से हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं और इससे जुड़े जो थोड़े बहुत भ्रम हैं वो हम दूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। नमस्कार।
क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग। ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास। उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी। राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी। 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए। हार्ट अटैक आया है। देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है। डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ओटीपी, पिन कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, समझदार बने। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो। साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। IEPF अथॉरिटी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। यार वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो क्यों मुझसे झूठ कहने लगा? वो कह रहा था इस स्कीम में पैसा लगाने पर 6 महीने में 10 के 20,000 हो जाएंगे। और तूने मान लिया? ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? 10,000 के 20,000। एक काम कर, ये ले 100 रुपये पकड़ना और जाके 10 किलो लड्डू लेके आ। अबे पागल है क्या? 100 रुपए में 10 किलो लड्डू आते हैं? अबे इसके तो 1 किलो लड्डू भी नहीं आएंगे। जब इतना जानता है तो ये नहीं जानता कि 6 महीने में 10,000 के 20,000 नहीं होते। समझदारी बढ़ा, लालच नहीं। लालच में न आए, समझदारी बढ़ाएं। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। कैनवास में रंग भरकर उसे जीवित बना देना एक कला कहलाती है। इसी तरह अपनी जमा पूंजी बढ़ाकर जिंदगी बना लेना भी एक कला ही है। मैंने भी ये स्टूडियो ऐसे ही बनाया है, पाई पाई जमा करके। मुझे भी लोग फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं, मुझे कन्विंस करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बहुत अच्छी है। उन लोगों के भी रेफरेंसेस देते हैं जिन्हें फ़ायदा हुआ है, पर मैं अपनी रिसर्च खुद करती हूँ। आपको भी यही करना चाहिए। सरकार के कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर आप अपने निवेश से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं, और ये वेबसाइट्स हैं मैं अपने पैसों को लेकर सावधान रहती हूँ, आप भी रहिए। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन द एडिशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग।
आज हम देखेंगे कि हमारी गोल्स को हम कैसे मद्देनज़र रखते हुए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमें वी शुड अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग? सो फाइनेंशियल प्लानिंग में बेसिकली हमारे को 4-5 स्टेप्स ध्यान रखने पड़ते हैं कि जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको हम किस तरह अपना पैसा निवेश करके, अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसको हम किस तरह अकाउंट फॉर करते हैं और अपनी एस्पिरेशंस एंड गोल्स को अचीव करते हैं। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले हमारे को सेविंग्स की ज़रूरत होती है। हमारे पास पैसा है, उसको हमने किस तरह इन्वेस्ट करना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना है जिसमें हमारी गोल्स अचीव हों। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे को लोन्स हमारे रीपे करने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। जो हायर इंटरेस्ट पे हमने लोन उठाया हुआ है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारे को पहले उसको रीपे करना चाहिए सो दैट हमारी लायबिलिटी कम हो जाए। लायबिलिटी कम होगी तो हमारे ऊपर बर्डन कम रहेगा, हमारा स्ट्रेस कम होगा और वी विल बी एबल टू अचीव आवर एस्पिरेशंस एंड गोल्स इन नियर फ्यूचर और फॉर आवर लॉन्ग टर्म गोल्स। सो लोन्स रीपे हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारे को अपने को सेव करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंश्योरेंस हमारे को हर मेंबर फैमिली के उस मेंबर की लेनी है जिसमें जो भी अर्निंग मेंबर है उसकी ग्रॉस इनकम कितनी है साल की, उसका 20 टाइम्स हमें इंश्योर करना है उसकी लाइफ को। अब एक है तो, दो है तो, तीन है तो, जो भी आपके अर्निंग मेंबर्स हैं, you need to ensure that his or her life is ensured in such a manner कि कल को कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस से अर्निंग बंद हो जाए तो हमारी इंश्योरेंस से हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं दे कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। नंबर 3 हमारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। नंबर 4 हमारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स क्या है? इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली ऑल डिपेंड्स अपॉन द गोल, राइट। सो इन्वेस्टमेंट्स गोल बेस्ड होती हैं हमारी, जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट्स में ये देखना है कि हमारे गोल्स कौन कौन से हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से हैं। तो यही चीज़ हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करती है हमारे को टू अचीव आर एस्पिरेशंस, टू अचीव आर गोल्स। सो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है इट इज़ एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ पर्सनल रोड मैप फॉर द फाइनेंशियल वेलबींग। सो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमारे को कुछ इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं। नाउ व्हाट आर दोज इनपुट्स फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस? नंबर 1, मेरी इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं, मेरा फाइनेंसेस क्या है, मेरे पास इनकम कहाँ से आ रही है, मेरी एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरा नेटवर्थ क्या है। अब नेटवर्थ एसेट माइनस लायबिलिटी, इससे पता चलता है मेरा नेटवर्थ कितना है। तो ये चीज़ नंबर 1 वी शुड जॉट डाउन। फिर नंबर 2 हमारे गोल्स क्या हैं। नाउ गोल्स में भी फ्यूचर गोल्स जो कि शॉर्ट टर्म होंगे या लॉन्ग टर्म होंगे। थर्ड इज आर रिस्क एपिटाइट, इन्वेस्टर का रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है। अगर मेरी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक द रिस्क। अगर मेरी एज ज़्यादा है और मेरे को अपने ही पैसा मेरा पैसा मेरे को अपने लिए ही चाहिए तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक द रिस्क। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क प्रोफाइल बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी ऑफ द इन्वेस्टेबल ऑप्शन। सो ये तो इनपुट हो गए। अब आउटपुट, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस से हमारे को आउटपुट भी मिलता है। अब आउटपुट क्या है? आउटपुट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस विच टेल्स यू हाउ टू यूज योर मनी टू अचीव योर गोल्स, कीपिंग इन माइंड 3 थिंग्स। अब वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? नंबर 1 इन्फ्लेशन, नंबर 2 रियल रेट ऑफ रिटर्न एंड नंबर 3 टैक्सेस। जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वहाँ से आई एम गेटिंग द प्रॉफिट, उस पर हाउ मच टैक्स लायबिलिटी विल बी देयर ऑन मी। सो 3 चीज़ें वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर setting up the financial planning for the investor. So in short, financial planning is the process of systematically
planning your finances towards achieving your goals. That may be short term or it may be long term. So goals, there are different goals of different individuals. मेरा जो गोल है वो डिफरेंट है, एक्स का गोल है डिफरेंट है, वाई का गोल डिफरेंट है. बट जनरली गोल्स कौन कौन से हैं? गोल्स में हमारे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं. बाइंग अ हाउस इज अ गोल which may be a long term or it may be short term for someone. Then buying a car, अगर मेरे पास एक कार है, छोटी कार है, but I want to buy another big car जो कि 3 साल के बाद मेरे को चाहिए, that is again a goal. I want to save for my children higher education, that is a goal. I want to save for my children marriage purpose, that is a goal. I want to invest for my retirement corpus, that is a goal. I want to save for my vacation purpose. आजकल बहुत ट्रेंड आ गया है. Everybody wants to go abroad. Everybody wants to go out of India for the vacation. Irrespective of हमने इंडिया में घूमे या नहीं घूमे, but wants to go out of India. So उसके लिए मैं सेव करूँगा 1 साल 2 साल, that is a short term goal. वैसे ही कुछ मेडिकल एमरजेंसीज के लिए मैं पैसा सेव करूँगा, that is a goal. Or for other family obligations. So these are generally goals which we need to achieve beforehand, which we need to understand कि इसमें से मेरे short term goal कौन से हैं और इसमें से मेरे long term goal कौन से हैं. So पहले ही we need to understand short term goals are those goals which we need to achieve before 5 years from the date of your requirement. सो 5 साल के अंदर अंदर जो अचीव करेंगे दैट इज अ शॉर्ट टर्म गोल. लॉन्ग टर्म गोल जो 5 साल 10 साल में आपके गोल अचीव होने हैं या उससे ज़्यादा आर लॉन्ग टर्म गोल. रिटायरमेंट कॉर्पस इज अ लॉन्ग टर्म गोल, बट सेविंग फॉर वेकेशन इज अ शॉर्ट टर्म गोल. बाइंग अ कार इज अ शॉर्ट टर्म गोल. सो मेरे को कैटेगराइज करना है कि मेरे एक शॉर्ट टर्म गोल कौन से हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से हैं. सो बाय कैटेगराइजिंग दिस और deciding about the future course of action, we need to understand कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसमें पहले तो मैं गोल सेटिंग करूँगा अपनी फाइनेंशियल प्रोसेस में. फर्स्ट आई नीड टू सेट द गोल्स, राइट. अब गोल सेटिंग में मैं क्या करूँगा? मेरे जो गोल्स अभी हमने डिस्कस किए हैं वो, फिर उसके बाद मेरा आइडेंटिफाई कर लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, प्रायोरिटीज असाइन कर ली कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, कितने साल के लिए चाहिए. तो मैं एक बकेट बना देता हूँ. वी मेक द बकेट आउट ऑफ आर रिक्वायरमेंट कि ये 3 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए, 10 साल में चाहिए, 15 साल में चाहिए, 20 साल में चाहिए. सो वी मेक द बकेट. और इस गोल्स की बकेट बनाने के बाद, असाइन टाइमलाइन करने के बाद, वी नीड टू असाइन द अमाउंट. सो फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारे को गोल है, उस गोल के साथ एसोसिएट कर रहा है कि मेरे को कितना पैसा चाहिए एंड इन हाउ मेनी टाइम्स. सो दिस इज अ फाइनेंशियल गोल, राइट. सो इट इज अ फाइनेंशियल गोल. बट बिफोर assigning the amount, before investing, before going into the financial planning, we need to understand 2 things. One is inflation. अब मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ और फ्यूचर में मेरे को पैसा चाहिए, उस पे मेरे को क्या जो मेरा रिटर्न आ रहा है, क्या इन्फ्लेशन उस पर अकाउंट फॉर कर रहा है या नहीं कर रहा. आई नीड टू अंडरस्टैंड. अब इन्फ्लेशन क्या चीज़ है? इन्फ्लेशन इज एक्चुअली अ महंगाई दर जो परचेजिंग पावर को हमारी रिड्यूस करता है. इन्फ्लेशन ऑलवेज रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर. सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन प्राइस इज एक्चुअली अ इन्फ्लेशन जो कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन मेरा कितना फ्यूचर में परचेजिंग पावर को रिड्यूस कर रहा है. तो ये चीज़ मेरे को समझनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन एक्चुअली इम्पैक्ट आर एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन एक्चुअली इम्पैक्ट आर सेविंग्स. दोनों चीज़ें हमारी इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करता है. अब इन्वेस्टर जो भी है, अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ, सपोज मेरा माई मंथली expenses are 30,000 today, 5% impact on my expenses
अगर मैं 5 साल के बाद देखूं तो मेरा वही खर्चा जो आज मैं 30,000 से चीज़ें बाय कर रहा हूं, वो मेरे को आई नीड टू स्पेंड 40,000 रुपीज़, 40,000, 5% इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। वही चीज़ अगर मैं 15 साल के बाद करूं तो आई नीड टू मेक 60,000 एज एक्सपेंसेस। वही चीज़ 20 ईयर्स के बाद करूं तो आई नीड टू मेक 85,000 एज एक्सपेंसेस। सो इन्फ्लेशन मेरी एक्सपेंसेस को इम्पैक्ट करके बढ़ाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इन्फ्लेशन जो है वो मेरे को मेरी सेविंग्स पे भी इम्पैक्ट करता है। अब इन्फ्लेशन सेविंग पे कैसे इम्पैक्ट करेगा? इन्फ्लेशन सेविंग को रिड्यूस करता है। जितनी भी मेरी सेविंग होगी वो इन्फ्लेशन उसको रिड्यूस करेगा। अब कैसे रिड्यूस करेगा? 5% इन्फ्लेशन अगर मैं लेके चलूं ईयरली बेसिस, तो 5% इन्फ्लेशन जो है वो मेरे को इफेक्ट करेगा कि मेरी सेविंग्स रिड्यूस होंगी। 1 लाख रुपया मेरी सेविंग है, 5% impact of saving on my impact of inflation on my saving, which will come down after 5 years, उसकी 1 लाख की वैल्यू will be 80,000 rupees। और वही 15 साल में 1 लाख की वैल्यू जो हो जाएगी वो 50,000 हो जाएगी, और 20 साल के बाद वही 1 लाख की वैल्यू मेरी 35,000 हो जाएगी। तो आई नीड टू टेक केयर ऑफ द इन्फ्लेशन, आई नीड टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लेशन बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी ऑफ माई ऑप्शंस, कि मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है वो क्या मेरे इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर कर रहा है। फिर जहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां पे नेट रियल रिटर्न पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अब नेट रियल रिटर्न क्या होती है? नेट रियल रिटर्न इज नथिंग बट it is an annual rate of return taken into consideration after taxes and inflation. Say for example, मैंने FD में इन्वेस्ट किया, 7% मैंने FD में इन्वेस्ट किया, मेरे को 7% रिटर्न मिला, 7% people are happy, but people don't consider inflation and taxes. अगर मैं 30% ब्रैकेट में हूँ, 7% पे सीधा 30% मेरा टैक्स कट जाएगा, which is 2.1 of 7, राइट। तो नेट मेरे पास क्या आया, बचा कितना? 4.9। इन्फ्लेशन अगर एवरेज इन्फ्लेशन में लेके चलूं 5%, तो 4.9 माइनस 5 मेरा नेट रियल रिटर्न इज माइनस 0.1%। तो विच मीन्स माई परचेजिंग पावर फॉर फ्यूचर विल गेट रिड्यूस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जो आज मैं खर्चा कर रहा हूं वो आई विल नॉट बी एबल टू मेक those kind of expenses in future if I invest in such instruments. But on the contrary, अगर मैं किसी risky asset में invest करता हूँ and if I get say 10% return, risky asset में भी मैं equity में invest कर रहा हूँ, I am getting a 10% as return, and according to income tax act मैं 1 साल के अंदर अगर redeem करके profit book करता हूँ तो equity में holding period अगर 1 साल से कम है तो it becomes a short term capital gain, and tax on short term capital gain on equity is 15%। तो 10 रुपए मैंने कमाए, 10 पे मेरा 15% टैक्स लग गया, मेरे पास बचे 8.5। अब मेरा इन्फ्लेशन 5% है, 5% पे मैंने 8.5 माइनस 5, नेट रियल रिटर्न इज 3.5, विच मीन्स माई परचेजिंग पावर विल गेट इंक्रीज इन नियर फ्यूचर। मेरे हाथों में पैसा होगा जो कि मैं फ्यूचर में जाके आई विल बी एबल टू स्पेंड मोर। सो वी नीड टू इन्वेस्ट इन सच इंस्ट्रूमेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड रिस्क एंड रिटर्न सिनेरियो ऑफ द इन्वेस्टेबल इंस्ट्रूमेंट, कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर इन्वेस्टिंग एंड बिफोर मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान। सो फाइनेंशियल प्लान प्रोसेस क्या है? देयर आर 4 पॉइंट्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो कि अभी हमने बात की। रिक्वायरमेंट क्या है मेरा प्लान क्या है, मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं नहीं कर रहा, और रिव्यू कर रहा हूं नहीं कर रहा। सो रिक्वायरमेंट में फर्स्ट वी नीड टू डू द गोल सेटिंग। मेरे क्या क्या गोल्स हैं उसको नोट डाउन कर लिया। करंट स्टेटस क्या है मेरा, उस गोल को अचीव करने के लिए हाउ मच मनी आई हैव फॉर दैट गोल, फॉर दैट पर्पस। तो जो भी रिक्वायरमेंट है, से फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बाय अ bigger car say in next 2 years,
उसके लिए मेरे को 20 लाख रुपीज़ चाहिए। अब मेरे पास ऑलरेडी जो कार है उसको आई सेल इट ऑफ, कुछ मेरा को उससे पैसा मिलेगा, कुछ मैंने 1-2 लाख रुपए और सेव किया, तो बाय एंड लार्ज टोटल मिला के आप कह लो 5 लाख रुपया है मेरे पास, तो 15 लाख की ज़रूरत है। तो 15 लाख मेरे को 2 साल के बाद चाहिए। तो आज मैं कितना इन्वेस्ट करना शुरू करूं सिस्टमैटिकली ऑन ऑन मंथ बेसिस, जो कि मेरे को 15 लाख रुपए 2 साल के बाद एक कॉर्पस बन जाए। तो ये current analysis we need to do for our future requirement. Then we need to make a plan. अब प्लान में ड्राफ्ट प्लान बनाइए, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमने बकेट्स बनाई हैं, 3 साल में क्या चाहिए, 5 साल में कितना क्या गोल है, 7 साल में कितना गोल है, 10 साल में क्या है, उनका क्वांटमाइज करिए कितना पैसा उसमें चाहिए। तो ये आप एक फाइनल प्लान बनाइए कि आप 3 साल के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप लेसर रिस्की एसेट में आप इन्वेस्ट करेंगे। 5 साल जो है उसमें यू डोंट माइंड टेकिंग अ मॉडरेट रिस्क। 7 साल 10 साल वाले या उससे ज़्यादा अगर आपका गोल है तो यू डोंट माइंड टेकिंग अ हायर रिस्क, बिकॉज एज द सेइंग इज हायर द रिस्क हायर विल बी द गेन। So I don't mind taking a higher risk for 7 years, 10 years goal, because market की साइकिल जो है, जहाँ भी मैं इक्विटी में पैसा लगा रहा हूँ, अगर 5 साल 7 साल 10 साल के लिए लगा रहा हूँ, तो मार्केट हैज़ गॉट अ साइकिल ऑफ 5 years. इस 5 साल में we get to see the bottom in the market as well as we get to see the top in the market. Once you cross that cycle and enters into another cycle of 5 years, तो it means आपका पैसा is safe to some extent. Risk of loss gets mitigated to a some extent if you are investing for 7 years, 10 years in equity. So we need to understand, we need to make a plan. अब प्लान बना के मैं रख लूं, मेरा गोल अचीव नहीं होगा. I need to implement those plans. एग्जीक्यूशन स्टेज आ गई, तो आई नीड टू, जो मैंने प्लान बनाया उसमें मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नोट डाउन किए हैं. There may be some debt instruments, there may be some FDs, there may be some equity schemes, there may be equity, direct equity, there may be mutual fund, which is the in thing in the market. People are getting benefited out of it. They are making wealth by investing through mutual fund. Because mutual fund में क्या है? Investors pull in their money in different schemes of the fund house. हर स्कीम के लिए there is a dedicated fund manager who invest on behalf of the investor in different market and securities depending upon the investment objective of the scheme and generate some return and pass back that return to the investors. So it is a professionally managed instrument. So मैंने 2-4 instrument mutual fund के भी रखे हैं. Don't go in for 20-30 mutual fund schemes. आप 2-4-5 maximum mutual fund scheme में अपना execute करिए and उसके बाद वेट फॉर 6 months, वेट फॉर 1 year, उसको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए. वेदर योर पोर्टफोलियो वेर एवर यू आर इन्वेस्टिंग, यू हैव इन्वेस्टेड, इज वर्थ फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर गोल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ 2 year गोल, 3 years गोल, 5 year गोल, 10 years गोल. वो वर्थ है नहीं है. अगर नहीं है, कोई उनमें से एक ऐसी स्कीम है जो कि आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं आ रही, तो यू कैन स्विच योर स्कीम फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम, जहाँ पे आपको गोल अचीव होने का चांस जल्दी हो सकता है. सो वी नीड टू रिव्यू ऑल दीज सिचुएशंस ऑफ आर पर्टिकुलर schemes where we have invested. Then financial process है हमारा. As you all know, we have already discussed, we need to identify your current financial situations. हमें ये देखना है हमारा खर्चा कितना है, हमारी इनकम कितनी है. उसमें मिसमैच तो नहीं है. मेरी इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो आई विल नॉट बी एबल टू achieve any of my aspirations. So we need to understand what is my income, what are my expenses, मेरा नेटवर्थ क्या है, उसको एनालाइज करते हुए हाउ मच मनी आई कैन सेव, आई कैन कीप असाइड फॉर माई गोल. देन आइडेंटिफाई योर गोल्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. आइडेंटिफाई फाइनेंशियल गैप्स. अब फाइनेंशियल गैप क्या है? सपोज आई वॉन्ट टू सेव फॉर माई डॉटर्स हायर एजुकेशन. अब डॉटर से फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी विल
be 18-20 years say down the line after 10 years. So I have 10 years time for accumulating the money for her higher education. हायर एजुकेशन में अगेन 20 लाख रुपए लग रहे हैं से फॉर एग्जांपल. मेरे पास मैंने ऑलरेडी अपनी बेटी के नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसमें आई हैव 7 लाख रुपीस. तो मतलब मेरा 13 लाख रुपया अभी भी मेरे को 10 साल में इकट्ठा करना है फॉर हर हायर एजुकेशन, उसकी फीस के लिए. तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आज कितना इन्वेस्टमेंट करूँगा जो कि फ्यूचर में मेरे को मेरा गोल अचीव हो जाए. तो ये फाइनेंशियल गैप्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ. देन प्रिपेयर योर फाइनेंशियल प्लान. हमने फाइनेंशियल प्लान बनाया, कितना पैसा किस में चाहिए. देन इम्प्लीमेंट योर फाइनेंशियल प्लान एंड पीरियोडिकली रिव्यू योर प्लान. अब बेनिफिट क्या है हमारा? बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान इज टू एंश्योर दैट जो भी whatever funds I'm investing are available at the right time. So I need to ensure, financial plan needs to ensure that whenever I require my funds, it is available for the goal. There should not be any mismatch in terms of कि मेरा गोल तो आ गया बट मेरा फाइनेंस उसके लिए अभी अचीव नहीं किया. मेरे स्कीम ने, मेरे फंड ने, मेरी इन्वेस्टमेंट ने वो अभी गोल का जो मेरे को पैसा चाहिए वो अचीव नहीं किया. सो वी नीड टू एंश्योर, राइट. सो फाइनेंशियल प्लानिंग तभी होती है कि जब मैं एंश्योर करूं, मेरा फाइनेंशियल प्लान एंश्योर करे कि वेन एवर आई रिक्वायर फंड्स आर रेडी फॉर माई यूज, राइट. सो फाइनेंशियल प्लानिंग जनरली व्हाट पीपल थिंक्स, financial planning is a complex thing. Financial planning is for rich people. No, it is not for the rich people. Financial planning is for masses. तो आप या तो you can make your financial plan of your own या you can take the help of the professionals to make your financial plan. Whosoever is earning more than 4 lakh, 6 lakh, they can, or irrespective of any income, you can make financial plans because there are certain benefits attached to the financial plans which is very helpful to the investor. अब वो क्या है? It helps in planning for emergency fund. मेरे को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो एक मेरे फाइनेंशियल प्लान में एक गोल है जो इमरजेंसी फंड के लिए मैं पैसा सेट असाइड करता हूँ, एक सेफर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता हूँ. इट हेल्प्स इन अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल्स. मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए मेरे को रिक्वायरमेंट होती है. इट ऑप्टिमाइजेज योर बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. मैंने अगर फाइनेंशियल प्लान बनाया है, कहीं पे इन्वेस्ट किया किसी गोल के लिए, तो आई हैव टू कट डाउन अ बिट ऑन माई एक्सपेंसेस ऑल्सो. जब तक मैं अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन नहीं करूँगा आई विल नॉट बी एबल टू अचीव माई गोल्स. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे जो खर्चे हो रहे हैं वो कौन से कितने ज़रूरी हैं, राइट. कितना ज़रूरी है मेरे को स्पेंड करना, तो वो चीज़ मेरे को कर्टेल करनी है. फाइनेंशियल प्लान उसमें भी हेल्प करता है. देन फाइनेंशियल प्लान हेल्प्स इन माई टेकिंग केयर ऑफ माई टैक्स लायबिलिटीज़. जो भी मैं फाइनेंशियल प्लान बना रहा हूँ उसमें मेरे को टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ. मैं अपनी टैक्स को बचा रहा हूँ. देयर इज़ अ सेक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 80C, जिसमें there are n number of financial instruments are laid down. If you invest in those instruments, you get a benefit of 1,50,000 from your, you get a rebate under section 80C to the tune of 1,50,000 from your taxable income. तो मेरी taxable income से सीधा 1.5 लाख रुपए कम हो जाता है. But we need to understand one more thing while taking care of tax saving instrument. अब वो क्या है? टैक्स इंस्ट्रूमेंट में 5 years बैंक फिक्स डिपॉजिट है, मतलब 5 साल के लिए मेरा पैसा ब्लॉक हो गया. टैक्स इंस्ट्रूमेंट उसमें 80C में इंश्योरेंस प्रोडक्ट है विच इज़ अ लॉन्गर पीरियड इन्वेस्टमेंट. उसमें PPF है, दैट इज़ फॉर 15 years. 6 years से पहले, 7 years से पहले आई कैन नॉट रिडीम माई यूनिट्स, रिडीम माई फंड्स, दैट टू अ पार्ट ऑफ माई इन्वेस्टमेंट. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, दैट इज़ फिक्स फॉर 6 years. There is a
scheme which is known as ELSS, Equity Linked Saving Scheme. It is a mutual fund product जो कि मेरे को help करता है मेरी tax save करने में under section 80C, and it comes with the least lock-in period of 3 years. 3 साल का lock-in period है. उसके बाद अगर मेरे को पैसों की ज़रूरत है तो I can redeem it and use that money for my expenses. Otherwise, I can continue the investment for long, whatever time I can be invested. उसमें मेरे को रिटर्न भी बहुत अच्छी मिलती है, वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग मिलती है, एंड आपको आपका पैसा डे बाय डे इंक्रीज होता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट वॉलेटिलिटी. सो दीज आर बेसिकली मेजर benefits of financial planning. Lastly, financial planning में it also ensures that a will is made. Because हम financial plan बना लेते हैं, हम throughout अपनी investments करते हैं, हमने retirement planning बना ली, हमने children higher education के लिए planning बना ली, हमने और goal setting कर लिए, but ultimately we need to hand over our wealth to our offsprings. So you need to prepare a will जिसमें you need to lay down everything कि आप क्या चीज़ अपने कौन से offspring को दे रहे हैं. So will is very important in terms of financial planning when we make the financial plans. Then tips क्या हैं? There are tips for making the financial plan also. It is that we need to start at the earliest. जितनी जल्दी हो सके we should start. अब हम कहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग आराम से कर लेंगे, अभी तो बहुत साल बचे हैं. बट इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट वी शुड मेक द रिटायरमेंट प्लानिंग एट द अर्लीस्ट सो दैट वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग एक कॉर्पस हमारा अच्छा बनेगा, जिसमें हम सेम जो आज लाइफस्टाइल जी रहे हैं वही आज के 30 साल के बाद, 25 साल के बाद, 20 साल के बाद, whenever you will be retired, you can maintain the same lifestyle. So start early, be honest to yourself, set realistic goals. आप कहें आपको 40% रिटर्न चाहिए, that is not realistic. You need to have a realistic goal. Unrealistic मत गोल बनाइए जिससे आपका गोल अचीव नहीं होगा. Unrealistic रिटर्न मत एक्सपेक्ट करिए जिससे आपकी goal achieve नहीं होगा. Then review your plan. Always review the performance of investments and be hands-on. कि this is your money. Nobody will help you out in this. So you need to be very particular about your investments. So be careful about your future financial plans. Then features क्या होने चाहिए? Financial planning के एक अच्छे financial planning के features क्या होते हैं? वो होते हैं, does it indicate your current situation, financial situation? Does it list out all goals in measurable terms? Does it lay out an investment strategy? So ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं. And with this, please make a financial plan of your own. Please make a financial plan in a realistic term. Please make a financial plan with honesty. Lay down all your income, expenditure and asset and liability, and think of कि आपको कब कितना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से bucket बना के अपनी investments करिए. So this is what we wanted to discuss regarding financial planning process, and happy investing with a healthy financial planning. Thank you very much. This is what we wanted to discuss in this edition. Thanks a lot.
Hello and welcome to this session. In this session, let us discuss Unit 1 of Block 1 of course MCS 221 Data Warehousing and Data Mining. So the topic for today's discussion is fundamentals of data warehousing. So the set out objectives for this particular session goes like this. First we discuss about the operational systems, strategic information and decision support systems, evolution of data warehouse and its characteristics, advantages of data warehouses, data warehouse tools and data warehouse architecture. So these are the set out objectives for today's session. So we just focus on the operational systems that we are using daily. To run any business operation, it requires many operational systems. Like the finance division may be requiring some sort of systems wherein which it looks after the financial aspects. The administration division may be having some sort of systems wherein which they may be looking after the administrative activities of the organization. Likewise, to carry on the day-to-day operations, there are several operational systems those are being required. However, when we talk about the operational systems, will that systems be providing the strategic information directly in order to improve the business? No. So these operational systems are the systems wherein which for the daily reporting or else weekly reporting, monthly reporting, and the activities that are happening from day to day, those particular things we can capture through these systems. However, in order to take business decisions or else in order to keep track of the improvement of the business, whatever the higher level management that those people they'll be thinking in terms of the next 5-year plans or 10-year plans. For that, the operational systems will assist. However, the decision support systems are the systems wherein which they look for. So the strategic information, what is strategic information? The information that is needed for formulating and executing business strategies and objectives meant for the entire organization. So it may be a kind of plan or else a kind of expansion for the next 5 years, keeping on the demand and other kinds of things. So likewise, they wish to have a kind of future vision and wants to make some sort of business strategies for future. So these particular things comes under the business strategies. However, the information which is useful for these kinds of decision making is the strategic information. So this particular information won't be directly gained or else won't be directly come onto the dashboard onto the managerial level. However, it should have some sort of system, a separate system called as the decision support system. So for example, let us talk about some sort of business objectives. Retain the current customers of the business. Add the customer database at least 10% over the next 3 years. Enhance the market share by 15% in the next 2 years. To launch new and better products in the market by the next year when compared to the edge companies which are producing the same kind of products. Improve product quality of top 5 selling products. Increase sales in the northeast region or northwest region, whatever the case may be. So these are some sort of business objectives wherein which the company may be interested in setting off. So for that reasons, a kind of information, special information called as the strategic information is required for making such sort of decisions. So it will help the executives and the managers who needs different kinds of information to get a detailed knowledge of the company's operations. So these particular things we can't get it from the operational systems directly. However, it requires a kind of system pooling wherein which the complete information about the company's operation needs to be pooled at one place, and from that particular thing we can mine the data and it can be given to the executives and the managers. Or else analyze how key business factors affect each other and then monitor how the business factors change with the time. Compare company's performance with that of their competitors or else with that of their earlier performance that was there in the previous year. So these kinds of things needs a kind of special information called as the strategic information. So the characteristics of this strategic information are integrated is one thing, data integrity, accessibility, and then timeliness of the information. Integrated.
So the operational systems, as I told you, may be working on different aspects or the functionalities of the organizations. One thing that they may be taking care, suppose if you think of the finance division. So finance division, within the finance divisions, there may be several sort of applications running over there, depending upon the functionality. We call them as the task-oriented applications or function-oriented applications. But when we talk about the integrated part, the integrated characteristics of the strategic information, it must have the overall enterprise overview. It doesn't suffice only till the information that we require only getting from the finance division. It may be requiring a kind of information wherein which the complete enterprise overview needs to be looked into. Then only we can strategize the kind of activity that we are planning for the next 5 years. Then the data integrity. So data in all the tables must be accurate. So the employee details may be spread over various kinds of applications. However, when we talk about the integratedness of the like the information system that we are talking, so the data integrity, that means the information should be available in an accurate, and that too it should not have any kind of inconsistencies. And then the accessibility. So all the data that may be pulled into a kind of a system wherein which the accessibility may be given to the higher level officials, wherein which they may take the strategic decisions. That too, it should be of very dynamic in nature, easily accessible in nature. Whatever the privileges that one needs to have at that particular higher level, all the privileges needs to be given to the user sitting at the top level management. And then timely information. Even though you procure the information and it is not available in time, that is of no use. So in order to take certain business objectives, in order to take certain strategic decisions, the timely information is very much helpful, and it should be available in stipulated time. That too, the recent time, like realistic information needs to be there to be pulled and to be given in a visualized form onto their dashboards. So that is the important feature. So these 4 characteristics are the characteristics which forms the strategic information main role. So there are several information crises available in most of the organizations. One may be, as we are talking about, all the systems may be working in some sort of silos, or else we can call them as the disparate systems. So some information may be available in one system and some information is available in another system, but the integratedness may be missing. So that kind of thing may be having. So whenever there is a kind of disparate system and it is not been integrated, however, the information crisis arrive in that particular in that particular context. So data needed for making strategic decisions must be available in a format that enables executives and managers. Suppose if you give a report kind of thing wherein which it is running to some 4 to 5 pages and is being displayed on the monitor, and that too with a short font size, that is of no use to take the strategic decision. So the format, whatever that we are aiming for in order to show the information to the strategic decision maker, so that needs to be visualized, and then that needs to be in a way wherein which directly they can predict something from the information that we are. So a decision. So for those people who are taking that kind of decisions, the kind of visualization needs to be visualization kind of components needs to be given to them, like a pie chart, graph, bar chart, whatever the case may be. So those particular things, when we place on their dashboards, then there will be a kind of meaningful decisions that may be happening during their discussions. So expectations from the decision support systems. So database designed for analyzing large volumes of data extracted from multiple applications and need to be integrated at some point of time. Then we should provide user friendliness, and a dashboard kind of applications needs to be given to the higher level management, intuitive to use for long interactive sessions by the users, containing read intensive data usage that is stable in nature. So these are some of the expectations from the database decision support systems. So one of the systems that we can visualize is a kind of data warehousing. So here the context of the data warehousing arises. So data warehousing is that whatever the information that has been generated in any company, in any organization, only some part
maybe 9 to 12% of the information is available, is readily usable to the authorities or else to the various levels of the management. Only 9 to 12% of the information is of use. Most of the information that is being generated may be used in another way, or else some sort of information that is just it will be thrown into the historical systems. So only you can guess the range that the information is coming into, and the usage of the information are absolutely are not of 100%. So there is a kind of lagging wherein which only some part of information in the organization is used, and some part of the information may be useful in the future, wherein which they wish to take the kind of performance that they were doing, or else they wish to take some sort of decision making strategies that the company wish to do for the next 2 years or the 3 years. A data warehouse is typically used to connect and analyze the heterogeneous source of business data. So this is the second way that the data warehousing can be visualized. So this is not data warehousing. Don't think that data warehousing is just a backup. It is not just a backup. However, it is a repository of historical databases that to organize in an organized way. So it is not just a dump, or it is not just a backup that we are thinking. The data warehouse is a process for collecting and managing data from diverse sources to provide meaningful insight into the business. Once the mining takes place on this particular data repository that is called as the data warehousing, we may be predicting several kind of hidden patterns which may be of use for the strategic decision making. So according to Bill Inman, who is the father of the data warehouse, he defined the data warehouse in such a way that it is a subject-oriented, integrated, time-variant, and non-volatile collection of data in support of management's decision-making process. Here comes the way wherein which he used the word called as the management decision-making process. So this belongs to a kind of decision support system wherein which once the business objectives are set and the data warehouse is in place, then it is of great use wherein which the company will be getting more insights from the data warehouse. And there is another researcher who has worked in the same time, like in 1990s, who has defined the data warehouse as a kind of data marts or else integration of the data marts. So he is called as Kimball, and he worked in the same, he was contemporary to Bill Inman, and he defined the data warehouse as data warehouse is the conglomerate of all data marts within the enterprise. So information is always stored in the dimensional model. So he introduced a database modeling technique called as the dimensional modeling technique. So these are the two definitions which are very much popular. One talks about the centralized data warehouse by Inman, and the second one talks about the kind of component approach called as the data mart approach, that to subject-oriented database data marts needs to be maintained, and the information whatever that is available subject-wise will be there in order to provide the insights of that particular department. So let us talk about the evolution. So during 1980s, there was a big boom, and else there is a big era which has ushered when the relational database management systems were of wide use. So this particular thing were very much popular when compared to the other types of the databases. So most of the people, whenever they go for the commercial applications, that too using some sort of databases, so they used to prefer relational databases instead of having the flat tables. So those days, the relational databases were very much popular, and then they improved the access to the valuable information. Because whatever that the data that is there, it is completely a kind of structured data. So using the queries like SQL and other kind of queries, it is very much easy to give the responses to the queries that are being posed. And it was very much easy to the application developers, wherein which by developing some sort of user interfaces as the front end, they used to pose the queries, and then they used to get very good information. So that was the age when, that was the year when during 1980s, the relational databases was very much popular. And then it was soon discovered that the database model to be efficient in transactional processing were not always optimized for complex reporting or analytical needs.
So once these particular relational databases were used for the commercial applications, the most of the purpose that they are solving is the operational, operational kind of systems. So those particular things takes care of day-to-day activities and are been giving a very good reporting kind of thing. But however, when it comes to the need of to take some sort of strategic decision, they fail to do. So Inman, who was considered to be the father of the data warehousing, he thought of an idea during 1970s. However, he worked for 2 decades. Like 1990, he come up with a kind of publication called as Building the Data Warehouse. So that was the publication which has given the overall route to the design of the data warehouses that we are using it today. So completely centralized data warehouse was the concept given by the father of the data warehousing. He is the Inman. And then later on, Kimball, on the other hand, favors the development of individual data marts at the department level, and he wished to have a kind of integration in between the data marts, and he wished to have the data like insights meant for the organization. Both the approaches are very much popular. Currently also, many of the companies who are the pioneers in the industry of data warehouse, they are using both the models as the standard models. So coming to the key features of the data warehouse, as Inman has specifically presented in his research, that data warehouse is a subject oriented. So he has utilized 4 kinds of terms or else concepts. One is the subject orientation, second one is the integrated, and then third one is the time variant, and the fourth one is the non-volatile. It is the kind of components that he has used, the features that he has used, and that collection of data in support of management decision making process. So this particular thing, whatever the data that is been collected using these 4 features, that supports the DSS kind of systems. So here you can see there are 4 features that one has that the Inman has specified. The subject orientation is one feature, integrated, time variant, and then the non-volatile. So let us have a look of all these 4 features. The first one is the data warehouse is subject oriented, as it provides information on a topic rather than the ongoing operations of the organizations. So all these particular operations, whatever we are talking about, the day-to-day operations, so those particular systems, we should not take them, those systems into consideration as it is. So we have to define a kind of subject for each and every activity, and then we have to have a kind of data warehouse. So in the finance, we don't take directly all the columns from the data that is there. So some sort of subjects needs to be taken care, and then it would be treated as a subjects for the data warehouse. Such issues may be inventory, promotion, storage, etc. So never does a data warehouse concentrate on the current processes. However, we are talking about the historical data that is present in the data warehouse. Instead, it emphasized the modeling and analyzing decision making process. It also provides a simple and succinct description of particular subject. We are not talking about the complete operational system. However, we are talking in terms of subjects in that particular department or the operational data system. Then the next feature that is been highlighted is the integrated feature. So the data may be spread in various systems, operational systems, which are used on day-to-day basis. However, from those particular systems, the data needs to be pulled in the form of subject-oriented. That too, we have to integrate all that particular data. So wherever the data related to the subject is available, that needs to be integrated and to be pulled. The data must also get stored in a simple and universally acceptable manner within the data warehouse. So all the data, whatever that is related to a particular subject, needs to be pulled into and is to be integrated. So we have to follow the name conventions, we have to follow all the formats, that uniform formats, and there should not be any kind of data inconsistencies, and there should not be any noise in the databases. All these things we'll be doing through some sort of logic called as the ETL logic. And then the third feature that is highlighted is the time variant. So compared to the operational systems, the time horizon for the data warehouse is quite extensive. So we are not talking about the data that is only present today.
So in order to have a kind of strategic decisions by the higher level management, we have to have a data from past 5 years or else from past 10 years. So some cases it may be from past some 5 years. In some cases it may be from since 10 years we have to take the data into consideration in order to predict certain patterns for the future. It contains a temporal element either explicitly or implicitly. Whenever we talk about the data, we talk about in terms of the time. So time variant plays a major role in the overall development of a data warehouse. And the fourth feature, as you can see, that is the non-volatile feature. So when we talk about the data warehouse, we are not talking about the realistic, like a real-time thing that is happening and the kind of updates that we need to have. The data warehouse is a data repository which will be helping us in taking some sort of strategic decisions. So all the historical data will be present over there. So there should not be any kind of right kind of operations into that particular data. So it is the data, whatever that is there, it should be used only for read-only purposes. The data should not be tampered, because all those things has already happened and we should not tamper with the data. However, we have to use the data in the read-only mode, and then we can't update also for that data. So it also assists in analyzing historical data and in understanding what and when it happened. So those particular things only needs to be taken. There should not be any kind of deletions, there should not be any kind of updations, there should not be any kind of insertions. Only the data that needs to be available should be available only in the read-only format. So let us see the insights. So we are talking this much about the data warehousing and what exactly are the predictions for the future. That the global data warehousing market size was valued as $21.8 billion in 2019. However, the prediction that is going for 2028, for the next 10 years from 2019, is $51.18 billion at a CAGR of 10.7% from 2020 to 2028. So this is the kind of expectation that they are having in the growth of the data warehousing market. Then what are the primary reasons? Earlier we used to have a short storage capacity devices. So right now there are dedicated storage systems for such in volume of data. So currently we are not at all talking about only the servers that we are using some 5 years or 6 years back. Currently all the applications, which has the huge volume of data to be treated, those particular systems are being put onto the cloud. So cloud-based data warehousing systems are the present trend that is going on. So when we talk about the cloud, the basic principle, underlying principle is the scalability. So the data volume that needs to be stored for 5 years, for 10 years, or else for 2 decades, so that particular data almost can be stored onto the cloud database, cloud data warehouse, and then that can be used in order to give futuristic plans. And then the coming, like the next trend that we are talking about is the AI and the machine learning. So these particular, using the use of AI and machine learning facilities, the smart databases are being constructed or else designed. So this will be the next trend and the reason for the market growth of the data warehousing domain. So rise in demand for column-oriented data warehouse solutions to perform advanced data analytics, need of low latency real-time wide analytics on the operational databases. So these are some of the reasons for the market growth that was being projected in the earlier slide. So let us talk about the advantages of the data warehouses. We are talking that it should be storing the data from past so and so years. So what exactly is the advantage that we are getting when we store such kind of data into the data repository called as the DW? So accelerated business intelligence. So from the data that is there, like pooled into or integrated into a kind of data, centralized data warehouse, from that we can have a very good accelerating business intelligence which can be predicted and can be used for future. Enhanced data quality is the next advantage. Consistency. Why? Because we are pooling the data subject oriented, and that too we are pulling into the data in a kind of integrated fashion which will be having inconsistencies. So
The consistent data can be achieved by using the data warehouse. Historical intelligence, we are not talking about only the today's system, but we are talking about we are about to talk about the future trends and other kinds of things, that too evaluating some historical databases. So historical intelligence is the advantage of the data warehouse. Integration with other sources, improved decision making process. So these are some of the advantages wherein which it propelled the intrusion of the data warehouses in a day way. So let us just talk about the data warehouse tools and the proprietary people who are carrying on the legacy. So Amazon Redshift is one of the company which is having a very good data warehouse tools toolkit. Xplenty is the second one. IBM InfoSphere, Oracle 12c, Teradata. So these are some of the companies wherein which they are using, they are helping the industry to build the data warehouses in their organizations. So with this particular discussion, we come to an end of this particular fundamentals of data warehouses. In the next session, let us talk about how this particular data warehouse architecture can be designed and what kind of architectures are available in order to design the data warehouse. So only one particular principal architecture is there, or else as the research has gone very much like length and breadth, so many of the architectures have come into place, and currently the cloud data warehouses are also being available offered by many of the cloud service providers. So these particular things we will see it in the next session. Thanks for your attention. Wish you all the best. बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी शान है मेरे प्यारे वतन, ने मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूँ मैं उस ज़ुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आब
छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी। Hello, viewer and learners of MAER program. You all are welcome to today's session of inductions program. Along with me, my colleague, Mrs. Asha Yadav, Hello. who is also the program coordinator of this program. We jointly coordinating this program. So all learners, viewers, particularly students who have joined, took admissions in this program in July 2022. So as a part of our program delivery systems, generally what we do in the beginning, we conduct some sort of inductions program. We call it as a just like as a परिचय, आपको प्रोग्राम के बारे में इस पूरी यात्रा जर्नी जो है आपका in the teaching learning process. So just to make you aware about how you have to go through your teaching learning process. So for this purpose, this today's session is there. So all learners who have joined, who have took admissions in this MA Entrepreneurship program. And the code of this program is MAER. So basically it is a master level program which has been launched in 2021, July 21 sessions. This is the second year. And definitely those learners who have joined this program, they must have come with a lot of ambitions, lot of expectations. Just to make you clear that this program is is designed for the purpose those who are already in this working as an entrepreneur, or as a fresh student, as a fresh learners, maybe from the any discipline, as we have laid down our eligibility norms, which is graduate from any disciplines. So any persons who want to be an entrepreneur, जिसमें ऐसे विद्यार्थी या ऐसे शिक्षार्थी जो कि जीवन में अपनी ऐसी ख्याल रखते हैं, ऐसी कल्पना रखते हैं कि एक सफल एंटरप्रेन्योर बने, तो उसके लिए ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी हमने उस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है. ये प्रोग्राम एज ए होल देखा जाए तो ड्यूरेशंस इफ से इट इज़ अ 2 years program which is divided into 4 semesters. So basically it is a semester wise program and it is being offered through open and distance learning mode. So before going to the program structure and details, how it has been designed and how you should go through this teaching learning process, before that we would like to inform you how the open distance learning system works, because many of the learners may have joined from the conventional systems. क्यों आशा जी, हमें इनको ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के बारे में यदि अपने लर्नर्स को बता दें
तो अच्छा रहेगा कि वो समझ सकेंगे और अपने जो क्रियाकलाप है, पठन पाठन का कार्य जो है अच्छे से संपन्न कर सकते हैं और उनको किसी तरह से परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है, ज़्यादातर हम सभी कन्वेंशनल सिस्टम से ही, कन्वेंशनल मीन्स फेस टू फेस जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में अपने क्लासरूम सेटअप में पढ़ के आते हैं, तो ज़्यादातर विद्यार्थी, मैक्सिमम लर्नर्स, दे आर कमिंग फ्रॉम द such type of systems, but many maybe they are familiar with the ODL, और ऐसे भी हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ा एक अच्छा माध्यम है, एक विधा है पढ़ने का, ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में रीज़न बिंग जो विधा जो फेस टू फेस या कन्वेंशनल सिस्टम्स में जो परेशानी थी, जो ऐसे विद्यार्थी जो अपना एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं बट किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंस हो, या ऐसे लोग ऑलरेडी इन द जॉब है बट दे वांट टू कंटिन्यू, दे समहाउ दे हैव लेफ्ट, और दे वांट टू एनरिच their educational qualification, they can also join. So ODL system is a slightly different from the conventional systems. Here you have a lot of flexibility, lot of freedom is there, but here as a learners we will advise you that be a very disciplined learner, be a very focused to your studies, then only you can complete the studies. Otherwise there are very much chances to learners who join with a lot of expectations, lot of enthusiasm, but at the end they won't be able to complete the durations as we was discussing, we were sharing with you, that is the duration is minimum is 2 years, but maximum durations, again just see it's a difference from the face to face, is the 4 years. So learners who have joined the program in this program, by chance they were not able to complete in this set periods, they can extend their studies for the another 2 years. Similarly, as we have in the conventional system, learners have to complete the classworks and immediately they have to appear for the exams, and generally it's happen in the annual systems में एग्ज़ाम साल के एंड में सेशंस क्लासेस को होता है, उसको बच्चों को परीक्षा देना होता है. हमारे सिस्टम्स में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोग्राम्स जो कि सेमेस्टर वाइज है, अदरवाइज भी वर्ष में 2 बार एग्ज़ाम होता है. तो इस तरह से आपको एक ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जब कभी आप तैयार हैं, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट है, असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गया, तो आप परीक्षा में दाखिल हो सकते हैं. लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट थिंग्स है, you should be a very dedicated, motivated learners, because we will provide the teaching learning material, we call it as a self learning material, SLM. Why self learning? Because you have to learn on your own. It is written in in a beautiful way, in a very interactive way, that any learners, if they go through the teaching learning materials, our teaching learning materials, they feel it as just now as we are talking with you, in the similar way we will find it our print material also over there. So आप उस किताब को पढ़ें तो लगेगा आपके पास शिक्षक है. तो इस तरह से आपको पढ़ना है, और वहाँ जो भी स्पेस प्रोवाइड कराया गया है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में, प्रिंट मटेरियल्स में, तो वहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ के लिए स्पेस दिया हुआ है, सो डैट वट एवर इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू फील विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन. एंड ऑल्सो देयर आर सेल्फ check progress are there, so you have to immediately attempt those questions to test it, just to check whether you have really comprehend those concepts, just to recall those things. So likewise there is a in between text questions are there at the end of the chapter, which we say in the formal system. Here we called which Asha will let you know also about the block and units. So at the end of the unit there will be the terminal questions, which will cover the whole unit's chapters over there. So that questions also you need to attend. Point is that
Whenever you get the material, whenever you get the instructions from our sides or from our regional centers, they are our very important our units or components of this teaching learning process. Regional center will be there in between this whole teaching learning process as a part of submission of your assignments. If any queries if you have with the teaching learning process, or suppose I-card or exam process, you can contact your regional center, respective regional center, which you have opted at the time of admissions. So they will help you, they will provide all supports, guidance in this matter. So before going further, so I will request Asha to please explain our learners about the structure of the program. Well, thank you. As you know, we have launched this program, MA Entrepreneurship, from July 2021, and already we have completed third semester of that session, and now you are the student of new session, and welcome to this program, and you have joined in this July session. So here is a detailed structure of this program, MA Entrepreneurship. We have 17 courses in this program. In the 17 courses, we have 15 theory courses, and 2 we have projects. One project at the end of first year, and the second project is at the end of second year. It means at the end of second semester, you will have to do one project, and at the last semester, it means fourth semester, again you have to do one project. So here is a detailed structure of this program. Program name is, as you know, program name is MA Entrepreneurship or Master of Arts Entrepreneurship, and course 1 is Business Environment. Under this course, we have 4 blocks. Block 1 is Socio-Political Environment, Block 2 is Legal Environment, and Block 3 is Regulations of Financial Market, and Block 4 is Economic Environment. Under Block 1, we will study dimensions of business environment, socio-cultural environment, social responsibilities of business, and political environment. In Block 2, we will study regulatory policies and framework, corporate laws, and labor legislation. And in Block 3, under this block, we will study about the financial market, capital market, regulations of capital market, and investor protection and corporate governance. Under Block 4, again, that is economic environment, and we will try to learn the structure of Indian economy, economic policies, small scale industries, and economic reforms. So this is all about course 1, that is business environment. Now come to the second course, that is fundamentals of environment, entrepreneurship. Under this course, we have 3 blocks. Block 1 is overview of entrepreneurship. Block 2 is policies and provisions for entrepreneurship development, and Block 3 is strategies and experiences in entrepreneurship. Under Block 1, we will study about the concept and theories of entrepreneurship, evolution of entrepreneurship in India, democratic states, development and entrepreneurship, and nature, types and levels of entrepreneurship, and the small scale enterprises and role of its in economic development. Under Block 2, we will try to learn policies and strategies regarding entrepreneurship, market, economy and entrepreneurship, management information system and its effectiveness in promoting entrepreneurship,
and funding including microfinance and other support systems. And block 3 of the same course is entrepreneurship strategies and experiences. Under this block, we will learn entry, survival, and advancement in entrepreneurship, Indian and global context of entrepreneurship, and public-private partnership of facilitating entrepreneurship and supporting women entrepreneurs. Now come to the course 3. Course 3 is business ideation and opportunity identification. Under this course, we have 3 blocks and 16 units. Block 1 is business ideation. Under this block, we will learn business idea generation, business ideas, approaches for idea generations, and block 2. Under this block, we will study about opportunity scanning identification, business opportunity identification, and how to prepare the business plan, and preparation of and development of business plan feasibility, etc. And the last block of this course is case studies. Under this block, we will study about building motivation and commitment, entrepreneurship activities, overcoming barriers of entrepreneurs, and how to generate business ideas, achievement, training, motivation. We will provide you a module for this unit. Now come to the course 4, that is business development entrepreneurial competencies. Under this course, we have 4 blocks. Block 1 is entrepreneurial competency. Under this block, we will learn about the competencies and identification of entrepreneurial competencies, assessment techniques, and identification and selection of potential entrepreneurs, case studies of successful entrepreneur, developing entrepreneurial qualities, attitude, competencies, and skill. So this is all about block 1 of course 4 business development and entrepreneurial competencies. Now come to the block 2. And block 2, that is business development. Under this block, we will study about the opportunity identification of business and business plan preparation, business plan evaluation, project fund setup establishment, follow-up supports to potential entrepreneurs, designing and managing support services. So this is all about block 2 of the course 4. Now come to the block 3 of the course 4. Block 3 is small scale enterprises. Under this block, we will study about the new and small enterprises, ownership, structures, and organizational framework. And the block 4 of this course, again we will provide you some activities and experiment under this block regarding entrepreneurs and entrepreneurial competencies, lessons for the trainer, identification of entrepreneurial skills, developing entrepreneurial qualities, attitude, competencies, and skills, all about. Now, come to the course 5. Course 5 of this course is IPR, Technologies and Commercialization. This course contains 2 credits and contains 2 blocks. Block 1 is intellectual property rights. Under this block, we will try to learn the intellectual property and in the Indian scenario, acquisition and maintenance of intellectual property rights, emerging issues in intellectual property. And under block 2 of the same course, that is block 2 is patent and technology development. Under this block, again we will
We will learn about the patents and the innovation, technology development, technology transfer, protection of traditional knowledge, and protection of computer software. Very good. Before we continue our discussions and structure, we would we should make our learners of MER program to aware to know what does mean by this name of the course title, then block and units. So don't get confused with these things. Once you go through our teaching learning materials, whether if it is a provided, some courses you will get it print also. In due course of all core print materials you will get it, but the meantime we will provide you the soft copies of all the courses, all 15 courses in the entire program. We will provide you through mail, and also many courses are available on our EGNOU. Just note down, this is very important site of IGNOU. That's EGNOU. If you type it on these things, you will and within EGNOU you have to go for the SLM, self-learning material, and then again go to the schools, then go for the programs. So likewise, you just reach to the MER program. There you can, those learners who are registered in this program, they can download our course materials. So there you will find it, the structures, blocks. Within blocks there will be the units. The point is that if you see the program as a whole, it is of 64 credits. 64 credit means each year you have to do 32 credits of the courses. In the second year it's a 32. And as mentioned by my colleague Asha, that each year you have to do project work also. And more importantly, there is a having 4 credits. 4 credits. And as you know, we in the beginning we have told you that a lot of flexibilities are there in this program. So there is a provisions for our learners that if they want to go to the at the workplace, at the work environment, to have the knowledge, to gain these things, so they can exit also after completing the 1 year of a program with a proper exit degree, that is a postgraduate diploma in entrepreneurship. Similarly, if you complete the second year, then you will get the master's in entrepreneurship. So why we have give these things options? So many learners, they want to go for the job, they cannot continue the whole studies in one go. So likewise, you can join the second year program after a gap of some time. So credit means 1 credit means of 30 hours of teaching learning, particularly learnings. 20 hours you have to study, you have to complete in 1 credit of 30. And within these things, 1 credit of studies, you also need to do that in-text questions. You have to attend the just today we are having this Gyan Darshan, this teleconferencing on the Gyan Darshan. Similarly, we both of us or with other experts or other teachers will be also available on IRC. We called it as a interactive radio counseling. So there also we will be there to clear your doubts. लेकिन उससे पहले ज़रूरी है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया अपने विद्यार्थियों को, कि आप ज़रूर पढ़ें पाठ्य सामग्री जो भी अवेलेबल कराया जाएगा, whether it is in a print form or in the EGAN course or in the soft form. Please go through the teaching. Then only you will be a very good learner. Then only you can participatory approach. Interactive teaching learning process में एक participatory approach बोलते हैं. तो उसमें आप जितना आप participate करेंगे, if you put a questions to us, then we also know where you have a doubt, and we will try to resolve those issues either through Gyan Darshans or either through IRC. Otherwise also you can send your queries to our email ID, or we have created an email ID for this program exclusively, that is a maer.ac.in पे आप उस पे भी you can just send the query. We'll definitely will try to resolve those queries. Important is the assignments and questions. All our instructions, whatever we are providing either through mail, also you also keep on visiting our
IGNOU website from time to time to know what is the update, what is the latest things are happening, to make your teaching learning process, this teaching learning journey happy. So we hope that we have tried to cover the introductory part for these programs. Anyway, if you have a doubt, please write to us. Thank you very much for watching this program. Thank you.